welcome to my channel The Science World, and if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, have you ever wondered why some plants can grow only in soil and some others survive only in water? Do you think they must be different from each other in some ways? Yes, these plants that are growing in the soil and the plants that are growing in the water, they are different from each other. And why they are different from each other, that we will see in this video. Okay, so today's topic is adaptations in plants. So let's start. Plants are found everywhere and you must have seen them growing in deserts, ponds, mountains and plains. Okay, depending on the surroundings where they grow, plants differ from each other. Some can survive in hot deserts, whereas some can grow in only cold regions. The kind of weather and the soil that plants need for their survival and growth is called their habitat. So first we will see what is habitat. Habitat is a place with living conditions suitable for an organism. It is called the habitat of that organism. Means habitat is a place where the weather and the soil that are needed for the plant that are good for its growth. Okay, means plant can grow very well in its habitat because these plants or the plant it has some special features that help them to survive in its particular surrounding, or we can say environment. And that is why some plants can live in hot deserts and some plants can grow in cold regions. Okay, this is the reason. So what is the meaning of habitat? ये habitat means एक ऐसी जगह जहाँ पर जो वेदर कंडीशंस है और जो सॉइल है वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है. ओके, तो हैबिटेट मतलब उस प्लांट, वो प्लांट जहाँ ग्रो होता है वो उसका हैबिटेट होता है. तो हैबिटेट क्या क्या हो सकता है? हैबिटेट एक डेजर्ट भी हो सकता है, एक पॉन्ड भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, या फिर वो कोस्टल एरिया भी होता है ना. तो हैबिटेट इज़ द place where these plants grow or any organism that live in the place, it is called its habitat in simple language. Okay, and you know that scientists have discovered that there are over 2 lakh different types of plants all over the world, and these all the plants, they are not having same type of habitat. Okay, some are living in water, some are living in desert, some are organisms means plants and animals both. Okay, but in this chapter we are going to read about only plants. So these plants, whatever plants scientists have discovered, they have different types of habitats. So desert, mountains, plains, coastal areas, ponds, okay, forest, these are the different types of habitats, and these plants grow well in their habitats. Okay, you can see here, this is the mountains, then deserts, plains and coastal areas. These different plants grow in different habitats. मतलब प्लांट जो होते हैं उनका एक हैबिटेट होता है और वहीं पे वो ग्रो हो सकते हैं. ओके, now plants are found on land as well as in water, and according to their habitats, we have divided these plants into two groups, that is terrestrial plants and aquatic plants. So terrestrial plants are the plants that grow on the land, and aquatic plants are the plants that grow in water. terrestrial plants वो होते हैं जो सिर्फ लैंड पे यानी कि सॉइल में ऊपर ग्रो होते हैं. ओके, लैंड पे ग्रो हो सकते हैं. और एक्वेटिक प्लांट जो है उनको बहुत सारा वाटर ज़रूरी होता है एंड दे ग्रो इन वाटर. ओके, सो terrestrial plants and aquatic plants are the two groups of plants according to their habitat. So next is, you can see the picture here. These are the terrestrial plants. Many examples are there. Whatever plants you see around you, that are the terrestrial plants that grow on land. And aquatic plants, lotus, water lily, hydrilla, many plants are there. Okay, so terrestrial plants and aquatic plants.
Then what is adaptation? Let's see what is adaptation. As different plants are found in different surroundings, special features are developed by the plant to adjust in this surrounding. Now we know that plants are growing in different surroundings, their habitats are different, and that's why according to habitat these plants have some special features. Okay, and these features help these plants to adjust themselves in these surroundings, and these features are known as adaptations. मतलब प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो कुछ मॉडिफाइड होते हैं, जो उनको उस सराउंडिंग में ग्रो होने के लिए या एडजस्ट होने के लिए हेल्प करती है. तो ऐसे जो फीचर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एडाप्टेशंस. ओके, एडाप्टेशंस आर द रीज़न why some plants can survive in conditions where other plants cannot. Because of these adaptations, all the plants cannot survive in all the climatic conditions. Okay, and that's why different plants grow in different climatic conditions and different soils, and they have different adaptations. So we are going to read about the adaptations in plants one by one. So first we will see about the terrestrial plants, how terrestrial plants adapt themselves. Terrestrial plants, you know, plants that are growing on the land. Okay, so plants growing on land, they are called terrestrial plants, and there are different types of habitats on land, such as deserts, mountains. Let us read how plants and trees adapt to such habitats. Okay, so when we talk about the land, land is not same everywhere. Somewhere it is plain, somewhere it is having mountains, somewhere it is having deserts. Okay, somewhere it is having marshy land, means having lot of water in it. Somewhere it is hot and damp. So according to these habitats, plants have adapted these habitats, and they grow well in these climatic conditions or these different types of soils. Okay, so let's see about the terrestrial plants. First is plants in mountains. Now mountains areas, we know they are at higher altitudes, and they are having cold climate mostly. Okay, so the plants that are growing here, they are tall and straight. These plants are tall and straight. For example, pines, deodar and firs, these grow in the hills, or you can say mountains, and they are popularly known as coniferous trees, or they are known as conifers. So these plants that are growing in the mountain areas, they are known as coniferous trees. Why they are known as conifers or coniferous trees? Because they bear cones. Coniferous trees do not bear flowers. Coniferous जो trees होते हैं उनके flowers नहीं होते हैं, flowers की जगह उनके cones होते हैं. I will show you picture. तो कोन्स होते हैं, और वो जो कोन्स है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं. ओके, सो दे कैन विथस्टैंड कोल्ड, मतलब कोल्ड को वो बेयर कर सकते हैं, और इसी वजह से उनको बोलते हैं कोनीफेरस ट्रीज़. कोनीफेरस ट्रीज़ और कोनीफर्स का मतलब होता है कि उनके कोन्स होते हैं फ्लावर्स की जगह. ओके, and therefore these trees have long needle like leaves. उनके जो leaves होते हैं वो कैसे होते हैं? long needle के जैसे, सुई के जैसे. और ये इसलिए होते हैं ताकि जो snowfall होता है वहाँ पे वो आसानी से slip हो जाए. These trees have long needle like leaves from which snow slips off easily, and this help them to survive in freezing weather condition. और इसकी वजह से वो उस cold condition में survive कर सकते हैं. Okay. Then the stem कैसा होता है इनका? Stem is thick and woody. Stem कैसा होता है? thick and woody. woody मतलब लकड़ी जैसा, and straight होता है, बिल्कुल सीधा सीधा उनका stem होता है. And they have branches, drooping branches होती है उनकी. drooping मतलब ऐसे झुकी हुई. And these drooping branches keep them from breaking away by the heavy snowfall. हमें पता है कि mountains have heavy snowfall होता है वहाँ पे. तो जो स्नोफॉल होता है उस टाइम जो स्नो
लीव्स के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, पूरे ट्री के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। तो वो स्नो जो है उसकी वेट की वजह से वो ब्रांच टूटे नहीं, इसलिए उनकी जो ब्रांचेस होती है वो ड्रूपिंग होती है, नीचे की तरफ झुकी होती है, ताकि वो ब्रांच वो जो है वो स्नो के वेट की वजह से टूटे नहीं। ओके, सो दीज आर द फीचर्स और वी कैन से एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स इन माउंटेन्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, दे आर टॉल एंड स्ट्रेट। देन नेक्स्ट, they are having needle like leaves, long needle like leaves. Then they do not bear flowers and they have cones. And the last one is they have thick woody straight stems and branches with and they are having drooping branches. Okay, so these are the adaptations of the plants in mountains. So let's see the pictures of this. Here you can see the cone. This is the cone of this mountainous plants, and you can see the leaves, they are needle like leaves. They are tall and straight, बिल्कुल सीधे सीधे वो ग्रो होते हैं, है ना, tall and straight. आप देख सकते हैं यहाँ साइड पे ब्रांचेस नहीं होती उनकी, they grow very straight. These are the examples. This is pine tree, then this is deodar tree and fir tree. These trees grow in mountains. Then here you can see the cones of different plants or different trees. These are the different types of cones, and these cones have naked seeds, means they do not have any cover. Okay, here also you can see the picture of a cone. Here again you can see the cone, and that's why these plants or these trees, they are known as conifers or coniferous trees. Then next we have plants in deserts. The desert areas that we know, they are very hot and very little rainfall is there, so plants are living in very harsh conditions, means very hot and with very little water. So desert areas have very few plants बिकॉज ऑफ लिटिल रेनफॉल, क्योंकि वहाँ बहुत कम बारिश होती है, प्लांट्स भी बहुत कम ग्रो होते हैं. एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स. तो फर्स्ट एडेप्टेशन क्या है डेजर्ट प्लांट्स का, कि दे हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स. उनके लीव्स नहीं होती है, लीव्स की जगह उनके स्पाइंस होते हैं. स्पाइन का मतलब होते हैं थॉर्न और वी कैन से कांटा जिसको हम बोलते हैं, स्पाइंस होते हैं. तो एग्जाम्पल है इसका कैक्टस. कैक्टस आपने देखा ही होगा, तो उसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो उसका लीफ नहीं होता है, एक्चुअली इट इज़ द स्टेम. तो ग्रीन कलर का स्टेम होता है और उसके ऊपर स्पाइंस होते हैं. तो स्पाइंस इसलिए होते हैं, हमें पता है कि जो लीव्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वाटर को बाहर निकालते रहते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू. ओके, और इस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस ट्रांसपिरेशन, लीव्स डू नॉट हैव दिस these cactus do not have leaves, instead they have spines on the stem. Okay, so the cactus, then palm and brittle bush are some of the plants found here. Cactus, palm and brittle bush. Okay, as there are no leaves, the stem of these plants is green. जो green part होता है cactus का वो होता है stem. Okay, और ये जो stem होता है वो कैसा होता है, fleshy. Stem is fleshy and it can store food and water for the plant. और stem fleshy होता है इसलिए वो अपने अंदर बहुत सारा वाटर कलेक्ट करके रख सकता है. ओके, और जो उसका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी कहाँ होता है, स्टेम में. स्टेम हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस इन द कैक्टस. ओके, देन द रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स ऑफ दिस प्लांट दे आर वेल डेवलप्ड टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर. हमें पता है कि डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है, सॉइल के अंदर भी, तो वाटर के सर्च में ये जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स बहुत अंदर तक जाते हैं, एंड दे हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम्स. ओके, टू रीच अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर तक जाने के लिए उनके जो रूट्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं. सो दीज आर द adaptations of plants in deserts. First one, they have spines instead of leaves. Second, they have green stem which is
which helps in the process of photosynthesis. And third one, their stem is fleshy or soft and it can store food and water. And the last one is they are having well developed root system. Let's see the pictures. Here you can see different types of cactus, this one, this one. So green part of the cactus is stem, and these spines you can see here, these are the leaves. Here you can see. Then these are the palm trees, you can see in the deserts, and you can see them near the oasis also. Okay, desert plants. And this one is brittle bush. This is brittle bush, you can see in the deserts. These plants grow here because they need very little water and they can grow in the hot conditions. Here you can see again different types of cactus. The next is plants in marshes. Now what is marshes? Marshy area generally lies near the seashore. Seashore जो होता है coastal areas, वहाँ पे marshy areas होता है जहाँ रिवर का बहुत सारा पानी जो है वो सी के अंदर मिलता है. वेयर रिवर्स एम्प्टी इनटू द सी. सी जहाँ पे रिवर जो है जहाँ पे सी से मिलती है. एंड दीज एरियाज आर वेट. ये एरियाज कैसे होते हैं जनरली? वेट एंड ह्यूमिड, और बहुत क्लेई सॉइल होती है वहाँ पे विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. तो ये मार्शी एरियाज ऐसे जो होते हैं वहाँ पे जो सॉइल होती है वो क्लेई होती है, मडी होती है. मडी मतलब चिकनी मिट्टी होती है जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, जिसको हम दलदल बोलते हैं हिंदी में, है ना. तो दलदल का जो एरिया होता है मार्शी एरियाज, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वेट होता है, गीला गीला सा होता है, ह्यूमिड, और पानी सॉइल के अंदर बहुत सारा पानी होता है, मडी सॉइल होती है ना. एंड द प्लांट्स फाउंड हियर आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. और जो प्लांट्स यहाँ मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. एज द सॉइल कवर्ड विथ वाटर. इसका जो एडाप्टेशन है वो अभी मैं बता रही हूँ आपको कि इनके जो रूट्स होते हैं, है ना, दे डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ इन द सॉइल बिकॉज सॉइल इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ वाटर. और वाटर की वजह से एयर सॉइल के अंदर नहीं जा सकती. एंड दैट्स वाई द रूट्स डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ एंड हैंस दे ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर. और इसीलिए जो रूट्स हैं वो सॉइल के बाहर ग्रो होते हैं. एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. और इसीलिए उनको कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स. इनके एग्जाम्पल्स हैं कैंडेलिया और सेरियोप्स. कैंडेलिया और सेरियोप्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स. सो व्हाट इज द adaptation of plants in marshes or marshy area? These plants are growing in the muddy, or we can say clay soil with plenty of water, and that's why they do not get enough air. Roots do not get enough air, and these roots come out of the soil and they grow over the soil. Okay, so this is the adaptation in plants in the marshy areas. Let's see the picture. Here you can see these are the mangroves. You can see here their roots are out of the soil, and these are the roots. They grow over the soil, above the soil. So here you can see the example. This is Candelia plant and these are the Cereops. These are Cereops. You can see these roots are growing above the soil. Then next we have plants in hot and damp soil. Now hot and damp soil you can see in the places near the sea coast. Okay, and these areas or the coastal areas, they are having generally hot and damp. Damp means you can say chipchipa or humid. Okay, means the air is having lots of humidity or lots of water vapor in it. Okay, and in such climatic conditions, the plants that are growing here, they need plenty of water and sunlight. Okay, and the trees here have many leaves, और इसीलिए उनकी जो trees होते हैं उनके बहुत सारे leaves होते हैं, and they do not shed their leaves in winter. जैसे कि हमने देखा है कि
बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं विंटर में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं ना, बट these trees do not shed their leaves in winter and therefore they are known as evergreen trees. These are called evergreen trees. So some of the examples of these evergreen trees are coconut and rubber. Let's see the picture. Here this is the coconut tree and here is the rubber tree. This is the collection of rubber from the rubber tree. So this is about the plants in hot and damp soil. Then plants in plains, plain areas where trees are found, they are of deciduous type. Deciduous trees means these trees can bear the hot summers, they can bear the heat of hot summers and they provide us shade, but they shade their leaves in winter. They shade their leaves in winter and give us enough sunlight to protect us from the cold. So this is the feature of these plants that are growing in the plains. And the examples of these plants are peepal, banyan, mango, gulmohar, shisham and sal. So these are the plants that are having adaptations to bear with the conditions or climatic conditions in the plain areas. So the trees, they are having lots of leaves, but these leaves they shade in winter and they give us or they provide us enough sunlight, and in summer they provide us shade. समर में वो हमें छाया देते हैं और विंटर में अपने लीव्स को शेड करके वो हमें बहुत सारा सनलाइट देते हैं. ओके, so let's see the pictures. This is peepal tree, then this is banyan tree, then mango tree, gulmohar, then this is shisham and the last one is sal. So these all are the plants that grow in the plains. So here we have finished this topic, that is terrestrial plants adaptations. Thank you for watching my video. Please like, comment and share and subscribe my channel. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.